Good morning, 11th standard, and we are discussing the unit number 9, and that is hydrogen. As all of you know that in the previous one lecture, we have already discussed about the position of hydrogen in the periodic table, that is in the modern periodic table, the occurrence of dihydrogen, as well as we studied about the isotopes of hydrogen. And today we are going to discuss about the hydrides, which is the binary compounds of hydrogen. And there are the different types of hydrides. So we will study about these. It is a very, very important topic. Before starting this, we can say there are the number of hydrides formed with the different elements when combined with the hydrogen, and that's why the hydrides that comes under the basically into three category. First one is the ionic or salt like, जैसे कि हम saline hydride भी कहते हैं. The second one is the covalent or molecular hydride, and the third one is the metallic or interstitial hydride. So beta, if we are talking about the ionic hydride, so as the name suggests, ionic hydride, तो क्या होगा ये? These hydrides are basically formed when hydrogen combined with the alkali metal or alkaline metal. ठीक है, S block के elements के साथ जब hydrogen combine करेगा, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा metallic nature के साथ आपका combine कर रहा है, so that's why the hydrogen behave as a electronegative character, whereas the metals that behaved as a electropositive character, and that the hydrides which is formed by the combination of group 1 or group 2 element with hydrogen, these are electropositive in character. Okay? These all the hydrides which are formed by the combination of S block element with hydrogen, those are known as the ionic hydrides, और हम उन्हें salt like भी कहते हैं क्योंकि इनमें salt nature होता है इन hydrides का usually, और saline hydrides भी होते हैं, as well as the ionic bond is present in like but the first member of the group 1, like that is lithium, the first member or the second member of group 2 like beryllium and magnesium hydrides, these have showing the covalent character. Reason being better because these are smaller in size. We can say they have high electronegativity in character and the absence of d orbital, due to which it shows the different behavior with respect to the rest of the members of this group elements. Okay. तो आयनिक हाइड्राइड्स की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो आपका ये होता है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. तो ये जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्राइड्स में. तो ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन के जो कि मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं. ना पी ब्लॉक इज फ्रॉम 13 टू द 18th ग्रुप एलिमेंट. तो 13 से लेके 18 में इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर किस ग्रुप के मेंबर के साथ कंबाइन कर रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट we can categorize the covalent or we can say molecular hydride into three types, that is electron deficient hydride, electron precise hydride, and electron rich hydride. Now as the name suggests, electron deficient hydride, so जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, the molecular hydrides जिनके अंदर central atom जो होता है बेटा, that is not completely filled octet. ठीक है, उसके लुईस स्ट्रक्चर में अगर हम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएं तो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो देयर आर लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in, like for example in BH3, तो boron के केस में boron is having a 3 electron, hydrogen is having a 3 electron, 3 plus 3 6. तो central atom boron जो है, after forming a bond also with 3 hydrogen single bonds when it is formed, then also it is having in its octet only 6 electron, whereas to complete the octet 8 electrons required. तो 2 electron अभी कम पड़ रहे हैं उसको. That means boron, that is BH3, boron hydride, is having a lesser number of electrons at the central atom, and that's why this is the reason that it is existing as a diborane whose formula is B2H6,
And this such type of a hydride which is formed when the central atom is having a lesser number of electrons than that is required, then that is known as the electron deficient hydride. Whereas the another one number or another category is the electron precise hydride, in which the required number of electrons are equal to the number of electrons, 8, or is equal to the number of electron present in the octet. ठीक है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, जितने एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मींस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बेसिकली when hydrogen combines with the group number 14 element carbon, silicon, selenium, tellurium, polonium, इनके साथ होता है. जबकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करते हैं तो आपका जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इनके साथ आएगा. गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13th ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे के सारे, एंड दे आर फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. जबकि 14th group carbon, silicon, selenium, tellurium, these are when combined with hydrogen it forms a hydrides, and these are the electron precise hydrides. Even group 14 ka element carbon, when combined with the hydrogen it forms a methane, but there are a huge number of hydrides which is formed by the combination of carbon and hydrogen, and even it is it completely you studied in a separate branch of chemistry, that is organic chemistry, in which carbon and hydrogen compounds are present. जितने भी alkane है, alkene है, alkyne है, all of these are consist of hydrogen and the carbon combination with different bonds, different single bond, double bond, triple bond, etc. ठीक है बेटा. So next type of hydride is electron rich hydride, and as the name suggests electron rich. तो electron rich क्या होगा, जिसमें कि central atom is having a more number of electron than it is required in the octet. Means 8 electron से 8 electron से ज्यादा electron अगर आपकी central atom के पास है, so such compounds comes under the category of electron rich hydride, which is possible by the combination of group 15, group 16, group 17 elements with hydrogen. Like for example, if we are talking about the group 15 hydride, तो इनके अंदर बेटा क्या होता है कि जो इन सभी में electron rich hydride में the electron which are not participating in the bonding, that also present at the central atom in the form of a lone pair. तो वो lone pair की form में आपके present होता है, like group 15 elements या group 15 hydrides जो होते हैं, ammonia and phosphine, these are having a one lone pair. अगर मैं बात करती हूँ group 16 hydrides like oxygen, sulfur, that is showing when it combines with your hydrogen, then it is form water, hydrogen sulfide, etc. And they oxygen or sulfur may be carrying a two lone pair. जबकि अगर मैं 17th ग्रुप की बात करती हूँ तो दे आर फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, etc. and in which the central atom means fluoro, chloro, bromo, iodo is having a 3 lone pairs. तो जो लोन पेयर की प्रेजेंस होती है वो इन ग्रुप्स के मेंबर्स को या इन कंपाउंड्स को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से और साथ में लोन पेयर की वजह से जो 17 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं या जो पहला मेंबर होता है हर ग्रुप का, व्हेन दैट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन, देन यूजुअली इट इज फॉर्म्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सच कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. सो दीज आर द हाइड्राइड्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय बेसिकली द डी और एफ ब्लॉक combination with hydrogen. Every metal of group 7, 9 do not form hydrides. तो group 7 और 9 के जो आपके metals होते हैं they are not forming the hydride. These are called hydride gap. प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप के 7 और 9 के ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग अ हाइड्राइड कंपाउंड. फ्रॉम ग्रुप नंबर 6 जो होता है ओनली क्रोमियम इज देयर टू फॉर्म अ chromium hydride. These hydrides are basically which is formed, these are non-stoichiometric. Non-stoichiometric का मतलब होता है
whose elements composition is not fixed, जिनकी बेटा जितनी composition होनी चाहिए, like iron oxide बोल रही हूँ तो sometime iron oxide is existing as a FeO, sometime it is existing as a Fe2O3, sometime it is existing as a Fe3O4. So whose composition is not fixed, such compounds come under the category this category, and these compounds are generally the non-stoichiometric, whereas the metallic hydride जो है वो hydrogen storage के लिए भी use किया जाता है मीडिया में, और it also used as a future source of energy or vehicles we can say. ये hydride जो होते हैं metallic या interstitial hydride, these do not conduct heat or electricity even as effectively as their parent metal do. ठीक है, तो ये हाइड्राइड जो है वो उतनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. तो आप सबको ही पता होगा कि वाटर इज अ commonly abundant and easily obtained in all chemical compounds. ये man के survival के लिए या human being या life के survival के लिए even हम कहें तो it is very very crucial or important compound. It existing in all three states, solid, liquid and gas. It is the universal solvent. Even you must aware that our body 75% is made up of water, as well as 70% of our body that is made up of water, as well as 75% of earth that also consists of water. Water जो होता है basically it is a colorless, tasteless and a volatile liquid होता है, and due to hydrogen bonding, बेटा H2O है ना, तो H2O में bond जो होता है covalent के साथ hydrogen bond होता है, and due to which it is forming a, it comes under the category of polar molecule or even very highly covalent compound like alcohol है, carbohydrate है, they easily dissolve in water. ठीक है, water का structure bend shape है with bond angle of 104.5 degree, और जो crystalline form of water होती है वो क्या होती है, ice होती है. Solid state obviously ice है तो उसी का एक perfect crystalline structure means the structure which in which a small portion repeat itself again and again and which is having a regular pattern. ठीक है, तो जिसका एक रेगुलर पैटर्न हो. आप सबको पता होगा डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वाटर से कम होती है, लेसर होती है, एंड दैट्स दिस इज द रीजन दैट आइस ऑलवेज फ्लोट्स ऑन द वाटर. यू मस्ट हैव सीन द ग्लेशियर्स इन ओशियन. तो वो ग्लेशियर क्या कर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स की टाइप के पहाड़ होते हैं बर्फ के, बट इवन दैट आल्सो दैट फ्लोट ऑन वाटर, इट नेवर सिंक or it never sunk in the ocean. So beta this is all about for today. आज हमने कहा that hydrides तीन तरीके के होते हैं, आपका covalent hydride, ionic hydride and metallic या interstitial hydride. Covalent hydride which is formed by the combination of P and P block element and hydrogen. Ionic hydride which is combined when hydrogen combines with S block element, and metallic or interstitial hydrides are the hydride which is formed by the combination of D block element as well as the your hydrogen. Next we also discuss about the physical properties of water. तो हमें पता चला ये colorless, odorless, tasteless, volatile liquid है. Volatile क्यों है? Because in water a hydrogen bonding is present which is a weaker one bond. So आपका oxygen जो होता है वो बहुत जल्दी क्या कर जाता है, वाटर से ब्रेकअप कर जाता है, and that's why the such molecules become a volatile in nature. ठीक है, apart from that हमें ये भी पता चला that it is a very crucial compound for man's survival. Its structure is a bend shape and bond angle of 104.5 degree, and its density is lower than water. It's a density of ice is less than that of water, and that's the reason that it is float on the water. Thank you.